Assalamualaikum, miss. Walaikum salam. How are you all? Fine. Good. Okay. Ready. How are you, Arif? Teacher, fine. And you? I'm also fine. Where were you? What teacher? Where were you since last 1 month? टीचर टीचर 2-3 दिनों से ना मेरे ने ये हो ही नहीं रहा था, इसीलिए टीचर मैं ये ना मेरी साइंस में पहली क्लास है. Okay, good. So, 7 participants is here. What miss? Assalamualaikum, miss. Walaikum salam. भाई क्या? How are you all? Fine. Fine, miss. Okay. Very good. बहुत ही अच्छा. I am Sal. Okay, class. Yes. Before starting our topic, in today's Assalamualaikum, class, miss. Walaikum salam. How are you, beta? ये सब वो कितने बजे क्लास खत्म हो जाएगी? At 12. Okay. Now listen, everyone. Before starting our topic, today we will play a game. I will play a game with you, class. Yes. Okay? Okay, miss. गेम खेल लें? Yes. A small game with you. आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मुझे. इतनी देर आई है टीचर, मेरे कान डर से अलग हो गए. Now it's fine. Yes, everyone. Now my voice is clear, everyone. Yes. Okay. So let's start our game. What is the game? I'm showing you the picture. Okay. I am going to mute all of you. Okay. So here is a game for you. Okay, class. So I am showing you just a picture of I will show you just a picture of look. Find the differences. Find the differences. You will find a difference in between these two pictures. Okay, you will find a difference in between these two pictures. Find 5 differences. Okay, here are 2 pictures which are similar to each other, but there are some differences in these pictures. So start to find the differences and just raise your hand. Okay, and just raise your hand when you will get your point. Okay, everyone. Okay. So let's start from Arif. Yes, Arif. टीचर Yes. How many differences are there? जो मैंने भी वन ढूंढा है टीचर, उनके जो लैंप है ना, उसका जो लीड है ना, उसका कलर वायर जो है. Okay. And टीचर एंड अभी तक टीचर बस टीचर अभी इतने ही ढूंढा है. okay. Now Danish. Yes, Danish. मिस मैंने भी वही ढूंढा था, कब से हैंड रेस किया हुआ था. मैंने पिक्चर देख के ही हैंड रेस करना है दिया था. Yes, Abdullah Danish. Here is another difference. मिस मुझे मिल गया. मुझे मिल गया दानिश. टीचर मुझे टीचर. मिस इसके तकिए पे जो है ना, एक स्टार नहीं है, इस पे है एक पे. Okay. टीचर जो कैट है ना, उसकी जो ये टेल है ना, देखिए उसका जो मिस. कलर है. टीचर कैट की टेल का कलर. Very good. And 3 मिस differences ये are there. देखें. One more difference I can see. One more difference I can see. Okay. Yes. Yes, Abdullah. Teacher, उनकी book. Teacher, there's no star in the second picture.
of the Okay. book. In Okay. the book. Very good. And next is, yes, Amsad. Fatma. Fatma. Yes, Fatma. Yes, the boys वो जो लड़का पहना हुआ है जो पैंट उस पे ऐसे ब्लैक डॉट्स है वो एक Yes, miss. Very good. Miss, Excellent. So all of you have to find out 5 differences. Excellent. Okay. Now I'm going to show another picture. Here is another picture. Look. Look at the picture, everyone. मिस ये 3 एरो पहले तो और एक एरोप्लेन नहीं है Okay. There's a one difference. टीचर बस के ऊपर 20 लिखा हुआ है बस के ऊपर 20 और Again मिस एक repeat. एरोप्लेन नहीं है मिस And- एरो और एरोप्लेन का भी नहीं Okay. टाइम मिस टाइम के ऊपर नहीं आया Okay, हुआ I'm टीचर going लैम्प to- के ऊपर की चीज हटी हुई है I'm going to unmute Asghar Abbas and Rija. Rija, Asghar Abbas, Mohammed Danish. Yes. मैं जो पिछली वाली फोटो थी वो जो बिल्ली वाली थी Just वो था उसमें एक और डिफरेंस था just let me know the difference in this picture as well. How many Miss, differences वो are there? मिस टाइम एरोप्लेन था टाइम और एरोप्लेन Asghar, just wait, Danish. Asghar, just let me know. Yes. मिस बस का नंबर एक में 20 और एक में 12 है Okay, 2 differences and टीचर एक लैम्प के उसमें लैम्प का भी है लैंप नहीं है जहाज का है टाइम है मिस टाइम yes, Rija. Rija. टाइम का भी है सर आई वांट टू से दैट मेरा नेट नहीं चलता था Senan. नेट पर Senan. और मिस एक और डिफरेंस टीचर वो जो क्लॉक टावर के बराबर में जो वो एक पोल सा खड़ा है उसके ऊपर जो नोक है वो इसमें नहीं है और पहली वाली पिक्चर में Excellent. Excellent. Okay. Now मिस the- यहाँ पे 2 रेड डॉट भी हैं और यहाँ पे नहीं है Okay. Okay. And the now next picture is here. Look at the Jerry. How many differences are there in Jerry? Look at the picture of Jerry and just let me know. मिस Yes. जेरी के पीछे नहीं मिल के नहीं Look at the differences. Yes. टीचर Rubasha. जेरी के जो बाल थोड़े से Ali उठ रहे हैं ना Salman. मिस Mois. मिस Yes. मिस जेरी के जो थोड़े से बाल उठ रहे हैं यहाँ पे मिस जेरी के जो यहाँ पे थोड़े से बाल उठ रहे हैं वो उस साइड पे जो है ना वाइट हो रहा है इसके पास Okay. And next. जो एक पिक्चर में जो है ना जारी की लाइक ये जो टंग है पिंक एक पिक्चर में बड़ी और एक छोटी है Excellent. Very good. Next. Okay. And the टीचर समझ में नहीं आ रहा डिफरेंस टीचर्स में कोई look at the picture. Look at the picture, na, Vita? Look at the picture carefully. टीचर सिर्फ एक डिफरेंस मिला है Okay. You can see more मिस यहाँ पे मैंने differences. बताया ना इसके बाल के पास Yes. बाल वाला भी बताया जो यहाँ पे इसके जहाँ पे थोड़े से बाल उठ रहे तो व्हाइट है और यहाँ पे ब्लू है यहाँ पे मिस Good. And okay. This round is over. Now next round is about. You will recognize a person. I will show you the picture of a person, and with the help of the picture, you will recognize that what is he or what is she. Okay. मिस So नेम ओके first listen to me. I am muting everyone. मैं सबको mute कर रही हूँ. उसके बाद किसी एक का mic आप raise hand करेंगे and I will unmute yourself. Okay. Just send me a message in chat box. Okay, everyone. Just send me a message in chat box and I will unmute you. Okay. Look at the picture. Look at the picture. Who is he? मिस्टर बीन Look at the picture. मिस्टर बीन Who is he? Yes. मिस्टर बीन Mr. Bean. मिस्टर बीन Very good. Now. मिस्टर बीन Okay. Now next is. Next is. Yeah. Just raise your hand. Just raise your hand. Just raise your hand. Yes. 6 participants raised their hand. And
Yes, Asghar. मिस ये Oh, जुनेद अकरम नहीं है? no, wrong. And Fatima. Yes, Fatima. Who is he? Who is he, Fatima? Yes, Fatima. Who is he? Don't you know? Sharaza. Yes, Sharaza. मिस वकार जका No, वही लग रही है। no, it's wrong. Abdullah Danish. Yes, Abdullah. Can you recognize the person? He is a famous singer. आतिफ असलम। Yes, excellent. It's Arsif ओ Aslam. आतिफ असलम Okay. मैंने बताया। Now, शिट यार शिट। now next is okay. अच्छा तो Now next is hmm, yes. Raise your hand. Raise your hand if you can identify a person. That who is he? Yes. Yes, Sinan. Albert Einstein. Excellent. Albert Einstein. Very good. Okay, the Sinan is the winner of this question. Okay, Sinan. And Okay. who told the answer of Atif Aslam? Okay. Now next is how foodie are you? I am going to show us a picture of some ingredients. मैं आपको कुछ ingredients की picture show करूँगी. With the help of that ingredients, you have to tell that with the help of this ingredient, which dish you can prepare. Okay. Now, okay. Look at the picture, everyone. Look at the picture, everyone, and just let me know with the help of these ingredients which dish you can prepare. Yes. Who will tell the answer? Yes, Taraza. Look at the ingredients. क्या करना है? Look at the ingredients and just let me know with the help of these ingredients which dish you can prepare. Teacher. Who will tell? Teacher. 7 participants Teacher. are. Teacher. Just wait. Teacher. Hmm. Yes. Just wait. Mohammad Zayan. मिस Yes, केक Zayan. मिस Yes, केक ही Zayan. बनेगा और क्या बनेगा? मिस केक Zayan. ही बनेगा और Yes, Zayan. Cake. Cake. Very good. Excellent, Zayan. मिस केक मैंने ही बोला था। मिस Okay. केक तो मैंने ही बोला था। You Yes, also. teacher. Cake है. You are also excellent, Sharaza. Okay. Now next is. Okay. अच्छा इस बार अगर मिस बेकिंग Okay. Now next is. No. Look at the picture carefully and just let me know. Okay. Now look at the picture and just let me know with the help of these ingredients which dish you can prepare. Okay. Raise your hand and I will unmute your mic. Okay. Yes, everyone. This time I will unmute the mic of Ali Salman. Yes, Ali Salman. Yes, Ali Salman. Yes, Ali. मिस No? ये बता क्या बनेगा? Are you food lover? Are you food lover? ओ तो लेकिन मुझे नहीं है, मुझे नहीं पता ये बनेगा क्या। Okay, okay. Amsal. Yes, Amsal. Miss Korma. Korma. But in korma you can't add rice, na? अरे मिस बिरयानी बन जाएगी। Yeah, good, very good. Biryani. Yes. Okay, everyone. So all of you have enjoyed this activity. Just let me know. Okay. Now, just let me know all of you have enjoyed Yes, the activity. teacher. Okay. Yes, teacher. Yes, teacher. Now come Yes, towards, teacher. now come towards your lecture.
Open your Okay. worksheet pack. Open your worksheet pack. Yes. Okay. Your worksheet pack and a rough copy and a pencil pen along with you to note down your lecture. Okay, everyone. In last class, we have discussed about dispersal of seeds. I am again repeating my lecture in today's class. Okay. Okay, everyone. In last class, we have discussed about dispersal of seeds. So many students are absent last class, so I am repeating my topic again about dispersal of seeds. Okay, everyone. Dispersal of seeds. Okay. What do you mean by dispersal? Dispersal means scattering. Means anything which is scattered, anything which can scattered, it is called also called dispersal. Okay. फैल जाना या disperse हो जाना, this is called dispersal. So seed can disperse. So seed can disperse in our environment with different agents. Okay. Seed can इधर को disperse. डिस्पर्सल बोलते हैं. Yes. Scattered is also called dispersal. Dispersal and scatter have the same meaning. Scattered and dispersal is फैल जाना, कोई भी चीज फैल जाना. ठीक है? Okay, everyone. So next slide is, as we walk around the garden, we come across the different types of new seedlings. What are seedlings? As I told you, in germination of seed, that a new plant, that a new baby plant is called a seedling. ठीक है? हम जब भी किसी गार्डन में जाते हैं और जब मूव करके आते हैं तो हम देखते हैं देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव एंड स्टेम्स ओवर देयर. सो हैव यू एवर वंडर, कि आपको कभी हैरान हुई कि हाउ दिस न्यू प्लांट्स ग्रो एंड हाउ सीड्स आर डिस्पर्स्ड? हैव यू एवर वंडर अबाउट इट? क्या आपने कभी ऐसा देखा कि ये प्लांट कैसे ग्रो करते हैं और ये सीड्स कैसे डिस्पर्स या स्कैटर्ड हो जाते हैं? ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट इट. नेक्स्ट, व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? व्हाट इज सीड डिस्पर्सल? Seed dispersal is the movement, spread or transport of seeds from the parent plant. What is the parent plant? Means from a plant that a seed start to grow. एक वो प्लांट एक वो सीड जहाँ से सीड या प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करते, दिस इज कॉल्ड पेरेंट प्लांट. ओके, away from the parent plant, seed can disperse, move or transport in different directions. Okay, now next is, there are many agents to transport the seed. हमारे पास बहुत सारे एजेंट्स हैं जो सीड को ट्रांसफर करते हैं. ठीक है? There are many agents to transport the seed from one place to another place. हमें अगर कोई भी चीज़ को फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई चीज़ बाहर से ऑर्डर करके मंगवानी होती है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू ऑर्डर फूड फ्रॉम डिफरेंट रेस्टोरेंट, सो वी हैव टू यूज अ राइडर एंड अ कॉल सेंटर एजेंट to order our food. Just like that, अगर आपको seed को disperse करवाना है, so we have to use different types of agents. Okay, here are different agents. How many agents are there? Look at the picture of agents. Agents of seed dispersal: animals, exclusion, wind, water, gravity. Okay, everyone. How many agents are there? 5 agents. How many agents are there? 5 agents. Exclusion, wind, animals, gravity and water. Now next is seed dispersed by wind. How the seed is scattered or dispersed by wind. With the help of wind, how the seed can disperse. This process of dispersal is mainly seen in those plants. ये प्रोसेस आपको किस प्लांट में दिखता है? विच बेयर वेरी लिटिल सीड, जिनके सीड बहुत छोटे होते हैं. ठीक है? स्मॉल इन साइज, स्मॉल इन साइज, हैव फाइन एंड हेयर लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर. बहुत फाइन होते हैं और हेयर लॉन्ग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक है? एंड अ विंग लाइक स्ट्रक्चर, एंड अ विंग लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम. I am going to share the picture of some examples of seed dispersal. Look at the picture. Dandelion. What we called it? Dandelion.
Just wait. Some students are raised their hand. Yes, Danish. Do you want to ask anything? No, miss. And Amsal also. No, miss. Okay. So come to the topic again. Dandelion. Dandelion is the example of seed dispersal. By we look at the picture of dandelion. They have a fine hair-like structure. You can see that in the picture. They have a fine hair-like structure. The seed which has the seed to get easily dispersed by the wind. Okay. So इनकी जो seed होते हैं, look at the picture. Here the seed, the brownish part, the seed, and the in this brownish part a hair, fine hair-like structure attached on it. So with the help of this seed, different the fine hair like structure will go into the wind with the help of fine hair like structure. Okay. Now next is, yes Rija, what do you want to ask Rija? Yes Rija. टीचर Hmm? आप थोड़ा सा जोर से बोले. My voice is not clear. Yes. Okay. Now okay, dandelion. Next is examples of wind dispersal. Other example is maple. Look at the picture of maple. Maple have trees with wing. You can see in the picture they look like wing. Okay, that help the wind disperse the seed. Some flowering plants grow fleshy fruit and have dispersed their seed. When animals eat the fruit, जब animals इन fruit को eat करते हैं, the seed pass through another digestive tract. So the food will go into the digestive system या in stomach into the animal body, and they can pass their food anywhere. Just wait. Okay. Here are the example. Other example of wind dispersal is maple. Okay. Maple structure is wing-like structure. As I told in previous slide, the wind disperse is wing-like structure, hair-like structure, real little in size and small in size. Okay. So whenever you can see that in the picture, the wind dispersal maple is have a fruit. When any animal eat this fruit, the seed pass through animal's stomach, and when they pass out into the animal's body, they excrete out this food in any other place, and whenever they fall this food from that part, seed again start to grow. Okay. Other example is sycamore. Another example is sycamore seeds. Sycamore. They have, you can see in the picture, they also have a wing-like structure. They also have a wing-like structure. Okay, what we called it, sycamore. They have a develop which cause them to spin through the air. Okay, लाइक मिनी हेलीकॉप्टर. ये स्पिन करते हैं, वैसी हवा चलती है तो इनके इनके जो विंग्स होते हैं ये स्पिन करते हैं और स्पिन करते हैं और लुक्स लाइक अ मिनी हेलीकॉप्टर. बिल्कुल इनका जो शेप है वो कैसा है, जस्ट लाइक मिनी हेलीकॉप्टर. हमारे पास छोटे हेलीकॉप्टर होते हैं जस्ट लाइक दैट. ओके. नेक्स्ट इज सीड डिस्पर्स बाय वाटर. I have explained each and everything in last class, but for few students, I am repeating my points again. Okay. Seed dispersed by water. In this macro seed dispersal, seeds float away from the parent plant. In this dispersal, seeds क्या करते हैं, float करते हैं. ठीक है. They are mainly seen those plants which needs in water. और ये उन plants में होता है ज़्यादा पानी में रहते हैं या पानी के करीब रहते हैं. ठीक है. Like beaches, lakes, pond, etc. Coconut palm, mangroves, water lily, water neem are a few examples of water dispersal. Okay, you can see in the picture is a picture of water lily plant. Water lily plant, they disperse in the water and they can float anywhere in the water. Okay. Now, next is seed dispersed by animals. There are different ways in which animals and birds disperse the seed. Few animals and birds
आर अटैच टू ब्राइट कलरफुल फ्रूट्स। कुछ एनिमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो उसके जो फ्रूट्स होते हैं या जो सीड्स होते हैं उनकी कलर की वजह से उनके ऊपर अटैच होते हैं, ठीक है। तो लुक एट द पिक्चर, लुक एट द पिक्चर। Here are some animals and fruits. They can attach fruits and seeds with the plot with their colorful for the colorful picture and colorful brightness. Okay. Look at the picture of here. They eat and they suck the juice of colorful flower and colorful fruit and fall anywhere. And they, whenever they fall the fruit and flower, so from that part they can grow anywhere. Okay. Example is goose grass. Goose grass. Goose grass is very successful. You can see their seeds will stick to animals clothing. ये जो होता है एनिमल्स के कपड़ों में भी चिपक जाता है, इवन ये आपके कपड़ों में भी चिपक जाती है, ठीक है। और जब भी विंड चलती है हवा से ये गिरते हैं जमीन पर, गिरने के बाद जो होते हैं इनकी जो लीव्स होते हैं ये जमीन पर स्कैटर्ड हो जाते हैं और ये एनिमल्स की बॉडी पे या ह्यूमन की बॉडी कहीं पे भी स्टिक हो जाते हैं। और जहाँ जहाँ ये स्टिक और आपके साथ साथ जाएंगे वहाँ वहाँ इनके लीव्स या इनकी सीड्स जो है वो ग्रो कर जाएंगे, ठीक है। Now, next and new topic of our class is seed dispersed by exclusion. Seed dispersed by exclusion. Now, just let me know, all of you want to ask any question? आप लोगों के कैमरास क्यों बंद है? Yes. Just let me know. Anyone want to ask any question? No? No class? Okay. Seed dispersed by exclusion. Some plants have pods. What is pods? They are seeds and fruits. What is pod? Note down this point. What is pod? They are seeds and fruits that usually split into two parts. Pods क्या होते हैं? आपके पास ये seed या fruit होते हैं जो seeds को two parts में split करते हैं, ठीक है। When they become mature means जब वो पूरे prepare हो जाते हैं, तो आपके पास कोई भी seed पूरी तरह से prepare हो जाता है, so they can split seeds into two parts. Okay, so this part is called pod. What is pod? Again, I'm repeating my point. They are seeds and fruits that usually split seeds into two parts. When they become mature, mature means जब आपके पास कोई seed पूरी तरह से prepare हो जाता है, when the seed will prepare fully, so they can split seeds into two parts. Okay. When the seeds are ripe and the pod has dried, आपके पास जब किसी भी सीड जो है राइप हो जाते हैं और पॉड ड्राइड हो जाते हैं, मतलब ड्राई हो जाते हैं, तो द पॉड्स बिकम ओपन एंड फ्रूट्स एंड सीड्स आर स्कैटर्ड। पॉड्स बर्स्ट हो जाते हैं, ओपन हो जाता है और फ्रूट जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लोजन इन फ्रूट्स लिटरली रेफर टू बर्स्टिंग विद ऑल इट्स एनर्जी। सडन से आपके पास तो कोई भी फ्रूट या कोई भी सीड बर्स्ट हो जाता है ना, एकदम से निकल के बाहर आ जाता है, तो उसको हम कहते हैं सीड डिस्पर्स बाय एक्सप्लोजन। Just wait, I'm showing the picture of explosion. Okay, just let me know अगर आपको स्क्रीन दिख जाए। Look at the picture over here. Look at the picture over here. Look at, see, see in the picture. Just wait.
Okay, I will share a picture with you, class, because I think internet is creating a problem. So I will share a picture with you that how the seed can disperse. Okay. Now, here are some examples of seed: peas, gourds, and okra. Here are the few examples of seed dispersed by explosion. Okay. Here are the few examples of um, seed dispersed by explosion: peas, gourds, and okra. You can see that in picture that peas are also at two parts. Okay, they have two parts. They can split into two parts when the seed become mature. Okay, and the fruit will come out, and the fruit will burst and come out from the seed and fruit. Okay, okra, gourds, and peas. When the time is over, join me again. Okay. Next is seed dispersed by gravity. We all know very well about the gravity is a force of attraction. ठीक है, हम सबको पता है gravity क्या है, force of attraction है that exists among all the objects in the universe. ठीक है, जब तमाम चीजें कहाँ यूनिवर्स की जमीन की तरफ अट्रैक्ट होती है उसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी. तो एज द फ्रूट्स फ्रॉम द ट्री, तो कोई भी फ्रूट यस अभी Teacher, the video we have to watch. Tell the name of the video because you are showing the screen now. So it was unable. So teacher, tell the name of the video so we will watch. which video you are talking about Abhi? Yes Abhi, again repeat your point. Teacher, I am saying the video you are sharing the screen now. It was unable. So teacher, kindly tell us the name of the video Now so the we video will is watch by able. ourselves. Now the video is able. Okay, I will share the video. Don't worry about it. As the fruit from the tree fall on the ground, due to the force of attraction, they sometimes roll down to some smaller distances, get buried in the soil after few days, and germinate into a new plant. आपने देखा होगा अक्सर ऐसे बहुत सारे ट्रीज होते हैं जिनके फ्रूट जो है वो जमीन की तरफ गिर रहे होते हैं. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्स बाय ग्रेविटी. तो जमीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से फ्रूट्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ. एंड जब ये जमीन की तरफ फॉल करते हैं तो क्या होता है, जब ये कहीं भी जाके they covered many different distances, and after cover some distances they can bury it in the soil, and after 2 days they germinate into a new plant. एक न्यू प्लांट में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं. जस्ट लुक एट द पिक्चर ओवर हियर. देखिए एक ट्री से बहुत सारे फ्रूट जो है वो नीचे की तरफ आ रहे हैं ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, एंड आफ्टर सम डेज ये कहीं भी जाके जो है वो अपने आप को ब्यूरी कर लेते हैं सॉइल के अंदर. आफ्टर सम टाइम they will generate a new plant. Okay, apple and coconut are the examples of seed dispersed by gravity. बिकॉज आपने देखा होगा न्यूटन्स का आपके पास एक लॉ भी है, न्यूटन्स का लॉ भी देते हैं कि एप्पल जो है वो जमीन की तरफ क्यों गिरा, क्यों, व्हाई द एप्पल फॉल टुवर्ड्स द अर्थ, बिकॉज फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, तो आपके पास एग्जांपल हो गया, आपके पास सीड डिस्पर्स्ड बाय ग्रेविटी, एप्पल एंड कोकोनट. Now I am going to unmute the mic of everyone. If you have any question regarding today's lecture, so you can ask me. We have 4 minutes now. Hurry up, Peter. Teacher, Hmm. I want to ask question. Out. Teacher, please share the screen of goose grass. Goose grass. Okay, before sharing the screen of goose grass, मैं आप लोग के वर्कशीट बता दूँ. आप लोगों का जो होमवर्क है. Teacher, please unmute कर लो. Just open your worksheet Sharza, pack. unmute करो. Open your worksheet pack. Sharza, अपना नंबर. Open your worksheet. All of you have to solve your complete worksheet pack. I think last worksheet pack is here. See, open this page in your worksheet. मेरे भाई की क्लास, टीचर मेरे भाई के पेपर हो रहे हैं, मैं क्लास लेट कर लूं? बेटा जस्ट हम क्लास लेफ्ट करने ही वाले. जस्ट लुक एट द वर्कशीट. What will you do? Here are some plants: oak, sycamore, tea, dandelion, goose grass, and roses. What will you do? What will you do? What will you do, बेटा? What will you do? आप क्या करेंगे? मेरे भाई का ऑनलाइन पेपर हो रहा है इसलिए मैं क्लास लेट कर लूं? बेटा time is going to up now. We have only 3 minutes. Okay. So after 3 minutes you can left.
Now look at the picture, everyone. What will you do? With the help of this picture, you will tell that how the oak seeds are dispersed. With the help of wind, with the help of which agent these seeds can disperse. For example, I gave you the example of sycamore. Sycamore can disperse with the help of which agent? Yes, Danish. कौन बताएगा? Sinan. Yes, Sinan. Yes, Sinan. जल्दी बताइए. Hurry up. Unmute yourself and just let me know. Seed dispersed by wind. Yes, very good. And P, how the P can disperse? Teacher. Which agent? Yes, Abhi. Sports. No, I am talking about with the help of which agent seed the P can disperse. Who will tell? मैंने आपको अभी ही बताया ये. I gave you the example of P also with the help of which agent P can disperse. Yes, Abhi. Sir, your voice is not clear. Yes, Abhi. टीचर आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, सो टीचर प्लीज स्पीक क्लियरली. Time is going to up, that's why my voice is cutting now. Just let me know with the help of which agent P can disperse. Yes. Yes, teacher. With the help of which agent P, Dandelion, goosegrass and roseseed. Here are the few examples. बहुत अटक रही है, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा. Okay, join me again. Yes, teacher, आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. आपकी आवाज बहुत कट रही है. मुझे आपकी आवाज बहुत सही. Join me again. Join me again. Javeria.